Hello and welcome to my channel, dear students. Today we are going to do MCQs on the topic human reproduction. So without wasting any more time, let us start. Number 1. Hysterectomy is removal of option A है ovaries, option B uterus, option C prostate gland, option D none of these. And the correct answer is option B uterus. Moving to the next question. Number 2. Identical twins are also known as option A. Monozygotic twins, option B. Dizygotic twins, option C. Fraternal twins, and option D. Polar twins. And the correct answer is option A. Monozygotic twins. Moving to the next question, number 3. Which extra embryonic membrane prevents desiccation of embryo inside the uterus? Option A है amnion, B chorion, C allantois, D yolk sac. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए amnion. ये एम्ब्रियो को ड्राई अप या डेसिकेट होने नहीं देता. Then number 4. Human egg is option A. Centrolecital, option B. Alecital, option C. Telolecital, and D. Megalecital. So correct answer जो है it is option B. Alecital. Alecital मतलब without yolk. Human egg में बहुत कम या negligible yolk होता है. Then number 5. Acrosome of sperm is derived from option A. Ribosome, option B. Golgi bodies, option C. Mesosome, and option D. Lysosome. So जो एक्रोसोम होता है इसके अंदर स्पर्म लाइजेंस या एंजाइम्स होते हैं ब्रेक डाउन करने वाले या डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लाइसोसोम. Number 6. Dash is a lytic enzyme released by the sperm. Option A. Hyaluronidase, option B. Trypsin, option C. Helicase, and option D. None of the above. And the correct answer is option A. Hyaluronidase. So it is a sperm lysin जिसके बारे में हमने 5th question में बात की थी. Number 7. How many autosomes does a human primary spermatocyte have? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 34, बी 44, सी 22, डी 36. द करेक्ट आंसर इज बी 44 बिकॉज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं दे आर डिप्लॉयड या इनमें जो क्रोमोसोम्स होती हैं वो डबल होती हैं. सो द आंसर हैज़ टू बी 44 या 22 पेयर्स. नेक्स्ट है नंबर 8. द ओवम रिसीव्स द स्पर्म at the dash. Option A animal pole, option B vegetal pole, option C zona pellucida, option D nucleolus. And the correct answer is option A animal pole. Next we move on to the question number 9. Dash is an organelle that helps the sperm to penetrate the ovum. Option A is acrosome, B. Zona pellucida, C. Mitochondrial spiral, and D. End piece of tail. So the correct answer here is option A. Acrosome. क्योंकि acrosome जो है इसमें sperm lysins होते हैं जो ovum के अंदर enter करने में help करते हैं sperm को. Next is number 10. In male reproductive system, sperms are concentrated in the dash. Option A है रीट टेस्टिस, B एपिडिडाइमिस, C वास डेफरेंस, एंड D सेमिनल वेसिकल्स. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B एपिडिडाइमिस. यहाँ पर स्पर्म्स आर कॉन्सेंट्रेटेड. नेक्स्ट इज नंबर 11. हाउ डज ह्यूमन स्पर्म लोकोमोट? ह्यूमन स्पर्म मूवमेंट कैसे करती है? ऑप्शन ए इज फ्लैजेला, B इज सीलिया, C न्यूट्रोफिल्स, D none of the above.
सो ऑब्वियसली स्पर्म जो है वो टेल की मदद से मूव करती है एंड टेल इज अ फॉर्म ऑफ फ्लैजेला. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट, नंबर 12. Cryptorchidism is a condition where dash. Option A, one of both testes are not developed. B, one or both testes fail to descend into the scrotum. C, one or both testes are not formed. And D, none of the above. Correct answer is B, one or both testes fail to descend into the scrotum. तो टेस्टिस बनते तो हैं, डेवलप होते हैं, बट डिसेंड नहीं होते इनटू द स्क्रोटम. 13. ईच ओवरी इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय. ऑप्शन ए पेरिटोनियम, बी लिगामेंट्स, सी एडिपोस टिश्यू, डी एरियोलर टिश्यू. तो करेक्ट आंसर है बी लिगामेंट्स. लिगामेंट्स की मदद से ओवरी पेल्विक वॉल और यूट्रस के साथ अटैच्ड होती है. देन नंबर 14. The hormone that is released from the testes is option A progesterone, B vasopressin, C testosterone, D none of the above. So easy question है ये. आंसर है option C testosterone, which is the male reproductive hormone and it is released by the testes. Number 15. Wolffian duct is also known as option A mesonephric duct, B ejaculatory duct, C major sublingual duct and D cystic duct. Correct answer is A mesonephric duct. Moving to the next question. Question number 16. Acrosome is filled with dash. Option A lipids, B hormones, C digestive enzymes, D none of the above. तो पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बिकॉज एक्रोसोम इज अ फॉर्म ऑफ लाइसोसोम. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नंबर 17. डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वीवीपैरस एनिमल. वीवीपैरस एनिमल्स मतलब जो लाइफ बर्थ देते हैं टू द यंग वंस. ऑप्शन ए इज गोट, बी इज डक, C is crocodile, D is none of the above. Very easy question. Answer है option A, goat. Moving to the next one. Question number 18. Dash is an example of an oviparous animal. मतलब egg laying animal का example बताना है इनमें से. Very very easy. Option A pigeon, B elephant, C sheep, D none of the above. And the correct answer is option A pigeon. Next is number 19. The dash is an ovoviviparous animal. Option A is basking shark, B bonobo, C blue shark, D none of these. तो इन सब में ऑप्शन जो A है basking shark, it is example of ovoviviparous animal. So correct answer is option A. Next is number 20. The dash is a temporary organ that connects a mammalian mother to its fetus. तो मदर और fetus या बेबी का कनेक्शन क्या है? ऑप्शन ए इज प्लेसेंटा, बी कोरियन, सी एंडोमेट्रियम, डी नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ए प्लेसेंटा. Placenta is the connection between mother and child. Number 21. Ovulation in the human female normally takes place during the menstrual cycle. Ovulation कब होता है? Option A at the mid secretory phase. Option B just before the end of secretory phase. C at the beginning of proliferative phase. And D at the end of proliferative phase. So यहाँ पर थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा. सो एक 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फर्स्ट 7 डेज है दे आर कंसिडर्ड एज द सिक्रीटरी फेज और ब्लीडिंग फेज, और जो 8 to 13 वाले डेज होते हैं दे आर द प्रोलिफरेटिव फेज. और ओवुलेशन जो है इसके बाद होता है, मतलब ऑन द 14th डे. सो सिंस इट इज़ हैपनिंग आफ्टर द प्रोलिफरेटिव फेज वी हैव टू मार्क द आंसर एज डी एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज. ओवुलेशन होता है प्रोलिफरेटिव फेज के बाद, उसके एंड में. नेक्स्ट इज नंबर 22. आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेसेस इनटू. तो ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल के साथ क्या होता है? ऑप्शन ए है कॉर्पस एट्रीसिया,
B. Corpus callosum, C. Corpus luteum, D. Corpus albicans, and the correct answer is C. Corpus luteum. जो ग्राफियन फॉलिकल है, it is a structure containing the ovum and follicular cells. तो जब ओवुलेशन होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और ओवम जो है उसमें से बाहर निकल आता है. अब ओवम निकलने के बाद जो बच जाता है, इट इज़ द एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल. सो ओवम बाहर निकल गया है और जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, इट इज़ नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम. नेक्स्ट इज नंबर 23. Immediately after ovulation, the mammalian egg is covered by a membrane known as dash. Option A, chorion, B, zona pellucida, C, corona radiata, D, vitelline membrane. And the correct answer here is option C, corona radiata. तो corona radiata क्या है? It is the follicular cells which surround the ovum. तो ovulation के बाद कोरोना रेडिएटा फॉर्म होता है जो ओवम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज करेक्टली मैच्ड विथ द टाइम पीरियड इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको यहाँ पता होनी चाहिए. ऑप्शन ए है रिलीज ऑफ एग 5th डे. ऑप्शन बी एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स 5 to 10 days. ऑप्शन सी endometrium secretes nutrients for implantation 11 to 18 days, and option D, rise in progesterone level 1 to 15 days. तो एक एक करके देखते हैं. रिलीज ऑफ एग 5th डे नहीं होता, इट इज़ द 14th डे. देन ऑप्शन बी, एंडोमेट्रियम रीजनरेट होता है 5 to 10 days, ये बिल्कुल करेक्ट है. देन एंडोमेट्रियम सिक्रीट्स न्यूट्रिएंट्स, ये गलत है, ये 11 to 18 days पे नहीं होता है. एंड ऑप्शन डी भी गलत है, बिकॉज 1st to 15 days पे तो प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होता है, फर्स्ट जो फेज ऑफ साइकिल होता है. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा जो था, इट इज़ बी, एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स 5 to 10 days. नेक्स्ट इज नंबर 25. रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन. ऑप्शन ए, पेरीविटलाइन स्पेस. ऑप्शन बी, जोना पेल्यूसिडा. ऑप्शन सी, कोरोना रेडिएटा. एंड डी, विटिलाइन मेम्ब्रेन. तो रिसेप्टर्स, स्पर्म को ओवम के साथ कंबाइन करने के लिए जो रिसेप्टर्स हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, जोना पेलुसिडा. नेक्स्ट इज नंबर 26. अ ह्यूमन फीमेल रीचेस मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ. ऑप्शन ए 50 years, ऑप्शन बी 15 years, ऑप्शन सी 70 years, ऑप्शन डी 25 years. द करेक्ट आंसर इज ए, 50 years. Next is number 27. 27th, a reaction of granules content which harden the zona pellucida and ensures sure block to polyspermy is. क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ इसमें से पॉलीस्पर्मी होने से प्रिवेंट करती है. ऑप्शन ए है एक्रोसोमल रिएक्शन, बी कॉर्टिकल रिएक्शन, सी एक्रोसिन रिएक्शन एंड डी कोरोनल रिएक्शन. करेक्ट आंसर इज बी, कॉर्टिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाती है, पॉलीस्पर्मी नहीं होती. 28. बिसाइड्स एक्टिवेटिंग द एग, एग को एक्टिवेट करने के अलावा, अनदर रोल ऑफ अ स्पर्म इज टू कैरी टू एग. स्पर्म एग तक क्या कैरी करता है? ऑप्शन ए RNA, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी DNA, डी राइबोसोम्स. वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज सी, DNA. नेक्स्ट इज नंबर 29. Preparation of sperm before penetration of ovum is. Option A, spermiation, B, cortical reaction, C, spermiogenesis, D, capacitation. So here they are asking कि sperm को prepare करने वाले process का नाम क्या है, and the correct answer is option D, capacitation. Moving to the next question, question number 30. Spermiation is the process of release of sperms from. Option A, seminiferous tubules, B, vas deferens, C, epididymis, D, prostate gland. तो बच्चों, स्पर्मिएशन का मतलब होता है, ये लास्ट स्टेप होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का. इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड एंड ऑब्वियसली इट अकर्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सो ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 31. Mature graphene follicle is generally present in the ovary of a healthy human female around. Option A, 5 to 8 day of menstrual cycle,
B. 11th to 17th day, C. 18th to 23rd day, and D. 24th to 28th day. So the correct answer here is option B, 11 to 17th day, because जो graphene follicle है mature होता है exactly half of the cycle में. Next is 32. Acrosomal reaction of the sperm occurs due to A. Its contact with zona pellucida of the ova. B. Reactions within the uterine environment of female. C. Reactions within epididymal environment of male. And D. Androgens produced in the uterus. करेक्ट आंसर है बी, रिएक्शंस विद इन द यूट्राइन एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल. फीमेल में स्पर्म एंटर करने के बाद ही एक्रोसोमल रिएक्शन होता है. नेक्स्ट है नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड? A. Seminal vesicle. B. Ampulla. C. Prostate. D. Bulbourethral gland. Very very easy question and very important also. ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, बिकॉज एम्प्यूला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, नॉट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Then we have number 34. Which among the following has 23 chromosomes? मतलब इनमें से कौन haploid है? ऑप्शन ए है spermatogonia, B है zygote, C secondary oocyte and D oogonia. So as you know, इन सब में जो secondary oocyte है ऑप्शन C, it is a haploid structure, मतलब इसमें 23 chromosomes हैं, बाकी सारे diploid हैं, सब में double the number of chromosomes हैं, except secondary oocyte. Next is which of the following hormones is not secreted by human placenta? Option A is HCG, B estrogens, C progesterone, D LH. तो इनमें से जो LH हार्मोन है it is not secreted by the placenta, बाकी सारे placental hormones हैं. So option D is the correct answer. Next is number 36. Morula is a developmental stage dash. Option A between the zygote and blastocyst. B. Between the blastocyst and gastrula. C. After the implantation. D. Between implantation and parturition. तो आपको पता होना चाहिए मोरूला 16 सेल्स वाली स्टेज है, तो ये इनिशियल स्टेजेस में ही प्रेजेंट होता है बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट. नेक्स्ट इज नंबर 37. आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग. A. Labia minora. B. Fimbri. C. Infundibulum. D. Isthmus. तो इनमें से तीन जो हैं वो फेलोपियन पार्ट के ट्यूब्स हैं, आपको नाम पता होने चाहिए. दे आर फिम्ब्री, इन्फंडिबुलम एंड इस्थमस. सो द करेक्ट आंसर हियर इज लेबिया माइनोरा. ये फेलोपियन ट्यूब का हिस्सा नहीं है, इट बिलोंग्स टू एक्सटर्नल जेनिटेलिया. नेक्स्ट नंबर 38. Temperature of the scrotum, which is necessary for functioning of testes, is always around dash below body temperature. Option A 4 degrees Celsius, B 2 degrees Celsius, C 12 degrees Celsius and D 8 degrees Celsius. Correct answer here is B 2 degrees Celsius. So scrotum is 2 degrees below the body temperature. 39. The nutritive cells found in seminiferous tubules are A. Leydig cells, B. Atretic follicular cells, C. Sertoli cells, D. Chromaffin cells. Correct answer is C. Sertoli cells. इनको nurse cells भी बोला जाता है and they are triangular in shape, present inside the seminiferous tubules. Next is number 40. Sertoli cells are regulated by the pituitary hormone known as dash. A. LH, B. FSH, C. GH, D. Prolactin. Correct answer is B. FSH, follicle stimulating hormone. Next 41. Seminal plasma is rich in A. Fructose and calcium but has no enzymes. B. Glucose and certain enzymes but has no calcium. C. Fructose and certain enzymes but poor in calcium. D. Fructose, calcium and certain enzymes. तो human seminal plasma is rich in all fructose, calcium and enzymes. Answer is option D. 42. Cowper's glands are located below. Very very easy. A. Gubernaculum, B. Prostate gland, C. Epididymis, D. Bulbourethral glands. Correct answer is B. Prostate gland. Next, number 43. Which cells secrete the enzymes to make implantation of embryos possible? A. Trophoblast, B. Blastomere, C. Outer layer of uterus,
D. Outer layer of blastocyst. Correct answer is A. Trophoblast. Next is number 44. What is the normal pregnancy period in humans? Option A 262, option B 250, C 2 यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, it should be 280 and D 375 days. So there is a mistake, printing mistake is there. So it has to be between 270 and 280. Some books suggest 270, some say 280. So it has to be 280 or 270. So this question had a little bit of a problem in it. So excuse me for that. Number 45. The fertilized ovum during the first 12 weeks is called option A embryo, B fetus, C blastocyst, D A and B both. तो पहले 12 वीक्स या पहले जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है उसे एम्ब्रियो बोला जाता है. तो करेक्ट आंसर इज ए एम्ब्रियो. Number 46. Chorionic villi cooperate with the tissue of the mother's uterus to form A. Placenta, B. Umbilical cord, C. Amniotic cavity, D. Embryonic disc. And the correct answer here is A. Placenta. Next is number 47. Which part is present between the placenta and embryo? Option A. Umbilical cord, B. Amniotic cavity, C. Embryonic disc, D. both B and C. Correct answer is A. Umbilical cord क्योंकि ये प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को कनेक्ट करता है. 48. The signals for parturition originate from A. Fully developed fetus, B. Placenta, C. Uterus, D. A and B both. Correct answer is A and B both. Fully developed fetus और प्लेसेंटा दोनों ही चाइल्ड बर्थ का सिग्नल ओरिजिनेट करते हैं. 49. During delivery, which glands send signals for the release of oxytocin? Option A. Anterior pituitary, B. Posterior pituitary, C. Hypothalamus, D. None of these. So the correct answer is option B. Posterior pituitary. ऑक्सीटोसिन जिसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हार्मोन है. लास्ट MCQ. Function of the placenta is A. To deliver nutrients to embryo, B. To deliver oxygen to embryo, C. Remove wastes from the embryonic blood, D. All of these. So yes, functions of placenta ये तीनों ही हैं. So correct answer is all of these. That's all for today, friends. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and if you need PDF file of these MCQs, you can comment in the comment section. Bye for now. Thank you and study well.